Welcome back to the 27th edition of the LFC Ahmedabad podcast with me, your permanent moderator, Vatsal, along with Dhaval from Canada and Meet from Ahmedabad. आप जैसा देख सकते हो कि we are running a bit late, but we are still going to answer a few questions and make predictions for game week 27. स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूंगा दोनों को कि आपका डबल गेम वीक कैसा रहा? Double game week, I touched 100 points, but it did not work out as expected. I could have, because मेरे में डायर था तो दोनों मैच नहीं खेला and Spurs kept clean sheet in both. Yes, okay. तो एक वो ब्लो था और दूसरा सोयनचू did not work out well. तो those two और केन मैंने कैप्टन रखा था, उसने भी कुछ खास किया नहीं. वो एक्सपेक्टेड था मुझे कि Kane could fail, so इसलिए I was advising last week as well कि this is not the ideal week for the triple captain because fixtures are not favorable. And what about you, Dhaval? मेरा 95 था, like comparatively good, but मैंने triple captain रखा था साला को. Like if Liverpool goes down, I also go down. So Liverpool went down and I went down. So no surprises. मीत इस बार प्रॉब्लम वही हुआ था कि लोगों ने टीम में गुंडोवान रखा था, ब्रूनो रखा था, साला रखा था, and none of them played well this week. मेरे में एक फायदा हो गया मेरे को कि मेरे में स्टोन्स और डियास दोनों थे. So like स्टोन्स का स्कोर और एस्पिलिक्वेटा ने दो क्लीन शीट रखी. So like he got me 13 points. I should have scored at least 70-75 maybe, but मेरे में ये डिफरेंशियल थे दोनों. So like I reached 95. I think तुमने ट्रिपल कैप्टन ना यूज करके अगर तुमने केन को कैप्टन रखा होता तो तुम्हारा 1 पॉइंट ज्यादा होता. Yeah. But I don't know, like triple captain की कोई अच्छी opportunity मिलेगी, like it might work out. I think there will be double game week in game week 32. There is chances. But अगर City में से रखोगे, like you need to be like dead sure about someone. Yeah. No, City नहीं, mostly I think Liverpool के सामने अगर टीम है उसका double game week होगा. And hopefully Liverpool will be informed to at least finish in top 4. Yeah. Then we can think. Yeah, I think now because of Jota, now Jota is back, so like we can be hopeful. Yeah, exactly. Link up play ho, because I think Klopp said something that he might play Fabinho in midfield now. Not sure, but he might. Or उसने ऐसा कुछ comment दिया था. So if that happens, then like we can maybe advise Jota. On that, I would like to say कि थोड़ा 2 मिनट में what I would like to say कि लिवरपूल का इस सीजन पे कहाँ पे मेजॉरिटी आउट ऑफ फॉर्म क्यों है. सो इन टर्म्स ऑफ दैट अगर तुम लास्ट 5 एनफील्ड्स डिफीट्स देखोगे सारी की सारी कंसीडर्ड फर्स्ट और फिर वी वर नेवर एबल टू इक्वलाइज और कम बैक. Yeah, makes sense. Yes. Basically हो क्या रहा है कि teams are scoring early, we are conceding early, and the teams are sitting down. So already Mane and Firmino are lacking confidence. ऊपर से when teams are allowed to sit deep, so it becomes even more difficult to break down. Yeah. अब उसमें क्या हो रहा है? So basically our midfield is also not the same. तो वो pressing भी नहीं है. Yeah. तो I would still say कि अपना problem is the defense only, because if we stop conceding these early goals, right? So we are still in the game, or when we are still in the game, when we score first, I think we win majority of the games. Yeah, it's like when we score first, वो सिर्फ 1-0 end नहीं होता, फिर वो 2-0, 3-0 भी जाता है हमारा game usually. Yeah. अब इसमें क्या होता है कि when we concede early, teams are now sitting back. Yeah. और they know कि अगर हम डीप खेलेंगे तो लिवरपूल आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू स्कोर. वही है ना. जस्ट वन ऑफ माय क्वेश्चंस, लेट्स से अगर हम कबैक को वो तो खेलेगा हर एक मैच, इट लुक्स लाइक दैट, पर मैं दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, लाइक अगर नेट फिलिप्स को ही खिला दो, लाइक जस्ट टास्क देम कि तुम दोनों को आगे आना ही नहीं है, लाइक यू डोंट प्ले हाई डिफेंसिव लाइन, एटलीस्ट एक तो पीछे रहे ही,
एक बंदा खेल सके, मे बी लेट्स से कबाक, ठीक है ना, तो एटलीस्ट वी कैन अफोर्ड टू कीप फबिनियो अप अहेड, बिकॉज अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इन चैंपियंस लीग, राइट? उसमें ऐसा है कि आई डोंट नो, समहाउ क्लॉप इज नॉट ट्रस्टिंग नेट फिलिप्स। इस वीक तो इंजर्ड था वो, या बट नॉक था शायद, बट आई डोंट नो क्लॉप का क्या है कि इशू विद नेट फिलिप्स उसका पेस नहीं है, या तो ही इज अफ्रेड टू प्ले हाई लाइन विद नेट फिलिप्स। और उसने डेविस के बारे में ये बताया कि लाइक डेविस मे बी नीड्स टाइम टू लाइक गेट अप टू द लाइक सिस्टम के बारे में, बिकॉज लाइक इट्स ही इज अ चैंपियनशिप प्लेयर, सो आई एक्सपेक्ट के वो रेडी नहीं होगा मे बी। इसमें क्या है कि कबाक ऑलरेडी प्लेड चैंपियंस लीग और शाल्के play in the similar way as Klopp because they have David Wagner over here, so their playing style and understanding of the game is more similar. अब क्या है कि अपनी लाइफ में कभी प्रेसिंग किया नहीं होगा उन लोगों को। Okay, let's say just this will only take like few seconds, like 30-40. अगर हम Fabinho and Kabak just तो वही खेलते रहे for the rest of this season, let's say Van Dijk भी वापस नहीं आता है for the last month, then what do you think the ideal midfield is? Like Thiago or Wijnaldum तो है ही, but who's the third player? Because Henderson is unreliable, he's injured out often. केटा अगर फिट रहता है तो he is a very good player in terms of forward thinking. but उसमें क्या है, I guess was it against Sheffield United कि वो आया और उसके 2-3 पासिस से ही पता चल गया कि उसमें टैलेंट है? Was it against Sheffield? Yes. उसमें ऐसा है कि there is no issue of him with quality. But उसका issue is with availability. I think that was the midfield three which Liverpool fans were hoping would be in the future, like Thiago, Keita, and defensive midfield would be Fabinho. Again, but the thing is, Keita's injury is always like on the horizon. He is going to get injured sooner rather than later. So उसके केस में एक like there is one mitigating factor कि हुआ था क्या, लास्ट 2 टाइम वो इंजर्ड हुआ तो ही गॉट इंजर्ड ऑन इंटरनेशनल ड्यूटी, तो होता था क्या, ही रिकवर्स एट द क्लब, वो जहाँ पे और इंटरनेशनल ड्यूटी पे जाता है तो हिज मैनेजर जस्ट प्लेज हिम 2 games in 3 days. हाँ वही, और एक गेम में वो 120 मिनट्स खेला और दूसरी 3 दिन के बाद 90 मिनट्स खेला, सो ही नीड्स दैट लाइक स्लोअर टाइम। और वो है तो फ्रेजाइल, लाइक वी कैन नॉट डिफेंड दैट थिंग कि वो फ्रेजाइल नहीं है, ही इज फ्रेजाइल, but he needs to be managed. उसको इंटरनेशनल मैनेजर्स ने मैनेज नहीं किया तो उसकी इंजरी उस टाइम बहुत ही एग्रीवेट हो गई लास्ट सीजन खास करके। वही है ना, इंटरनेशनल मैनेजर शुड अंडरस्टैंड कि ये भाई लिवरपूल की सिस्टम का प्लेयर है, सो यूज अकॉर्डिंगली। वो अपने हाँ, पर इंटरनेशनल मैनेजर्स ओनली थिंक अबाउट देयर, लाइक उनको क्वालिफाई करना है, उनको वर्ल्ड कप खेलना है, सो like I'm not defending Keita's record here कि like वो injured नहीं रहता है, but like there are some factors that like वो भी अपने हाथ में नहीं है। So I think Meet, before we go to questions, I just have one last question regarding Liverpool to both of you. Should Klopp think about benching Firmino and Mane for just one game? I think there is a high probability there. इसमें क्या है कि Jota came on, he looked very sharp. So I think either you play Jota along with Firmino into 4-2-3-1. Yes. Or you drop Firmino and play maybe Salah or Mane up front and Jota on left wing. So I think you could see happening in the future game weeks because Firmino नहीं अच्छा खेल रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये सीजन ही अच्छा नहीं खेला वो। I think 4-3-3 होगा and Mane will be in the center because highly possible. क्योंकि Mane like he can head, he can like just एक final shot के लिए Mane is good. Mane is not able to carry balls और उसके Mane is not for build up play. वो like he can play but like he is playing poorly this season. हमारे पास और कोई options नहीं है, like people keep saying ये अपने ट्विटर पे देखो तो चिल्लाते रहते हैं ये खेला वो खेला, सबसे ज्यादा गालियां साला को मिलती है despite him being the top scorer in the league. So I don't know why उन लोगों का दिमाग कैसे चलता है, but they are the most foolish people I've ever known. So should we move to the questions now? I guess. Yeah. Go ahead. इस बात पे मैं एक चीज और बोलूंगा कि एक क्वेश्चन भी है जो which is
which I don't like to answer, but still will answer it. So I know what he's talking about. I know, yeah. So we just have 3 questions this week, but if you have any other questions, you can leave them in the comments and we can answer it through YouTube comment section. The first question is a common question from Shrey and Raghav, and they are asking for potential replacement for Harvey Barnes. Okay. हार्वी बार्न्स के लिए 2 चीज है, या तो आप डबल सिटी एंड दिस दूसरी टीम कौन सी है, साउथहैम्पटन. Yeah. सिटी एंड साउथहैम्पटन बोथ हैव डबल फिक्चर्स, राइट? तो अगर आपको पोटेंशियल एडवांटेज लेना है डबल फिक्चर, तो वन ऑप्शन इज आइदर यू हैव वार्ड-प्राउस देयर फॉर दिस वीक. दूसरा चीज, Foden hasn't played in last 2 weeks, so there is high probability that Foden starts this week and City has 2 fixtures. So another option is Foden. KDB? KDB I don't think uske same price bracket mein aayega, so they will have to take -4. So I'm not. If you have budget, then maybe KDB yeah, ke sath ja sakte ho. Of course, yes. Okay. So, assuming you don't have Gundogan, then you should have Gundogan. Or agar assuming you have Gundogan and if you want replacement for, but I think Rafinha is also a good option because Rafinha plays in game week 29. Right. So game week 29 भी double है. भी नहीं game week 29 is blank week. Oh, okay, समझ गया. तो वो blank week में if you can have Rafinha, that would be also fine. Okay. So I think Ward-Prowse, Foden or Rafinha would be my picks. और अगर आपको ट्रम्प कार्ड ही लेना है तो इवन डिएगो जोता. Yeah, जो मैंने already ले लिया है. Nice. So we have another question from Shrey. He is asking, should he keep Salah or remove him if he still has a wild card to play? I don't know with whom you will replace. Yes, true. Because Salah is a top scorer. ठीक है, उसका लास्ट 2-3 वीक में नहीं आया है, बट इवन लिवरपूल इज प्लेइंग पुअर, तो उसमें साला कांट डू एनीथिंग. साला इज ऑलरेडी क्रिएटिंग सो मेनी चांसेस, अब आगे वाला फिनिश नहीं करेगा तो ही कांट डू एनीथिंग. Like Mane missed the chance in last game, right? हाँ. Yes. So like वही बात है, Salah is someone who regardless of form should be in your team, same like Bruno Fernandes. वो भी अभी लास्ट 2 वीक से कुछ उसका रिटर्न नहीं आया है, बट these are the players, एक तो वो कॉस्ट उनकी बहुत हाई होती है, तो उनको रिप्लेस करने के लिए इधर यू हैव टू टेक माइनस, और जैसे कि श्रेय सेइंग वाइल्ड कार्ड या फ्री हिट यूज करना पड़ेगा, राइट? तो जस्ट टू रिमूव 2 or 1 of these players doesn't make sense to me. So it's better to just keep him, stick with him, क्योंकि most of the players around the world also keep Salah and Bruno regardless of their form. Yeah, and they are the avenues जहाँ से assists और goals आते हैं usually. So like you cannot keep out the players who actually provide points in the team. अपने last season like there were Ty and Robertson, right? Yes. अगर नहीं थे तुम्हारे पास उनमें से कोई, तो you were missing out on like points. Yeah. Like same will happen with Salah. Like he will explode in few games, but you'll just miss out the ride. So और सब लेके बैठे हैं, so like yeah, exactly. You don't want to miss out on that crucial points. अगर एक गेम वीक में भले लिवरपूल हारी 2-1 से, पर वो 1 साला का गोल है, still it will give you points, right? Yeah. I guess the next question is specifically for Meet, because he was looking forward to answering that question a bit. So it's about it's asking us on the process of deleting your FPL team because someone had kept ये मेरा ही क्वेश्चन है, Patrick Bamford as their captain. ये मेरा ही क्वेश्चन है. Meet, can you throw some light on this? ये और आशुतोष साले इधर FPL की पैनल में आते हैं, ठीक है? दोनों साले दोनों टीम सेट नहीं करते हैं, ठीक है? यूजुअली मैं आशुतोष को रिमाइंड कराता हूँ तो आशुतोष का हो जाता है. तो लास्ट वीक क्या था कि आई वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो आई my team was remaining to be scheduled. तो मैं खुद मेरी टीम सेट कर रहा था, उसमें मैं आशुतोष को रिमाइंड कराना भूल गया.
ओके तो भाई साहब ने उसने भी बामफोर्ड कैप्टन रखा, और रॉसन जो इधर आता है पैनल में एक्सपर्ट एडवाइस देता है, कैप्टन नहीं चेंज किया साले ने, एंड वी आर प्लेइंग इन सम इंटरनल कंपटीशन, उसमें हम लोग 12 पॉइंट से आ रहे, अनबिलीवेबल। या 9 पॉइंट से आ रहे, 9 पॉइंट से, ऑल थैंक्स टू दिस रोशन कीपिंग बामफोर्ड एज द कैप्टन। वो साला मिलेगा, मैं इसको मारने वाला हूँ, आज आया वो बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन है, लाइक या प्रेस्टीज का सवाल है वो हमारी। हमारा फॉर्मर मॉडरेटर जो था आशुतोष, वो भी दिख नहीं रहा है। सो आई गेस इट्स राइट टाइम कि अभी मैं ही सब होस्टिंग करूं, राइट? या नहीं, आशुतोष इज लाइक मच मोर बिजी। आशुतोष ज्यादा बिजी है, वो जो ट्विटर पे टॉप रेड्स और उनको ये पीछे है, लाइक ही हैज अज्यूम्ड अ न्यू रोल कि मैं भी एफएसजी को गाली दूं। सो उसमें क्या है कि लिवरपूल का स्टैंडर्ड हो गया, या तो ओनर्स को गाली दो, या तो फिर क्लब को या प्लेयर्स को गाली दो कि ये अच्छा नहीं। बट तुम देखो तो सही कि सिचुएशन क्या है। हाँ वही तो। दैट्स द थिंग, लाइक मैं ऐसा नहीं हो कि मेरे को जॉन हेनरी ने $100 दिए कि ले भाई तू मेरे तरफ बोल, ऐसा नहीं है। लाइक आई अंडरस्टैंड, बट तुम मार्केट रियलिटी तो समझो। वही बात है like, ना, वही बात है। अब तो हुआ है क्या, मैं बोलता हूँ कि एम्बापे इज अ पॉसिबिलिटी, तो मेरा मजाक उड़ता है। वो बात तो अभी ऐसी है कि मैं भी मजाक उड़ाऊं। पर उसमें he is a possibility. भाई पॉसिबिलिटी तो कोई। there has been very huge losses this year. अब आर्सेनल जैसी क्लब ने they recorded 50 million loss last, कल ही ट्वीट आया। So Arsenal have recorded 50 million loss. अब उन लोगों ने फॉरलो किया प्लेयर स्टाफ को and all such things के बाद भी they are recording 50 million loss. तो even United is borrowing 60 million because they are in massive debt. वो जो वाइप आउट हो गई है ना मैच डे रेवेन्यू 60 मिलियन, सो आई थिंक जो क्लब की जो डे टू डे रनिंग कॉस्ट्स है वो इस बार सबको इन लोगों को खुद को निकालनी पड़ी है। इट्स लाइक मैच डे इनकम प्लस वो मैच डे मर्चेंडाइज, वो सब सेल भी कम चला गया ना उन लोगों के हाथ से। एग्जैक्टली। और अपना भी आया नहीं है फिगर्स, बट आई थिंक देयर विल बी लॉसेस। अपनी इनकम एवरेज इनकम लास्ट सीजन की इनकम 45 to 50 मिलियन पाउंड्स थी फ्रॉम मैच डे ओवरऑल, वो चैंपियंस लीग और सब कुछ मिला के। सो दैट मनी इज गॉन, ठीक है ना। और वो जो क्लब्स को रिबेट देनी है वो ब्रॉडकास्टर्स को, वो डीले हो चुकी है, बट दैट मनी they will spare like provisions to like give out that money, right? फ्यूचर मनीज जो ज्यादा मिलने वाले थे वो कम मिलेंगे। हाँ राइट, सो नाउ द क्लब्स हैव टू डील विद दैट। और हमें पता है कि लाइक आवर क्लब वो है, वो ये सब सोच के ही चलते हैं ये लोग, बिकॉज़ दे डोंट वांट टू गो इन डेट अगेन। तुम स्पेन में देखो, रियल मैड्रिड डिड नॉट साइन एनी सिंगल प्लेयर, ठीक है। क्लब लाइक रियल मैड्रिड, मतलब जो गैलेक्टिकोस को लेने के लिए जाना जाता है, हाँ they did not sign any player. Barcelona did not sign any player. मतलब एक Semedo बेच के डेस्ट लिया। I don't know if they made any other signing. Yeah. That's it. I think they own. Go ahead. Yeah, so two of the big clubs did not struggle to get any players or even spend. तो अपने पता नहीं लिवरपूल फैंस को पता नहीं, they are expecting कि we match the spending of City, which is never going to happen. Let's be honest. Not going to happen. We always be a club that sells to buy. Yeah, that will eventually what will happen. या तो अपने को ऐसे प्लेयर खरीदने पड़ेंगे सस्ते में जो अच्छे ग्रो हो. Yes. Right. Like we can only afford to buy, let's say, a Sancho or like a Haaland in maybe once every 2 or 3 seasons. ठीक है ना? Like we cannot buy them every season. So that's the reality. तो अपने fans को समझ लेना चाहिए कि this is a reality. Like you can wish for whatever you want, but you're not going to get it. You can't expect. Yeah. हर मैच से हारने के बाद हेनरी को टैग करके याट का, I don't know how do you spell it, याट तो उस पे इस पे तू स्पेंड कर रहा है, हमारे क्लब पे स्पेंड नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता।
There is Yeah. separate account for Yeah. Liverpool and separate account budget allocation for other things. Yeah, और वो न्यूज़ भी हमने सुना है कि like the FSG like the group है, it's borrowing like 530 million. That is for Red Sox and Liverpool. Liverpool, उनके yes. पूरे ग्रुप के लिए. तो So मतलब because they वो 10% stake sell कर रही है. So I think with the 10% stake there will be a boost in that regard. Yeah, at least we can expect that they will Yeah. spend at least let's say 100 million. उतना तो spend करेंगे क्योंकि they have revenues coming next year, ठीक है ना? क्योंकि England is getting vaccinated by June, so they are fully going through that. अपना एक तो outgoings क्या है और दूसरा क्या है कि how much loss we are incurring. Yeah. Do we have time? What's up, Meet? Yeah, we can go. We still have the prediction section to make. Yes. Oh, okay. You can finish in 1 or 2 minutes. The prediction Yeah. one? नहीं ये धवल कुछ. Yeah, so like I was saying, yeah. जो तुम सिर्फ players के नाम बता सकते हो, like I'm asking this to Meet, कि who should like definitely go, like रखो भी मत, just go. Ox. I think if you want to sell, I would first sell Ox. Yes. फिर Origi. Shaqiri. उसका तो contract खत्म हो रहा है Origi का. नहीं Origi renewed when we won Champions League, तो उसका 2025 तक है. Okay. I guess as much as I like Shaqiri, I think his time is also numbered in Liverpool. Yeah. These 3 players have to leave. Yeah. Okay. 3 players have to leave, and in other, I think even Keita, if available, should be loaned, but Klopp, I don't think Klopp would loan him. Another thing is we need. I think Gini will go. Yeah, free पे जाएगा वो तो. Just one question कि वो कुछ news आई थी Gini might want to renew, genuine sources है या वो कुछ अभी तक आइडिया नहीं, कुछ आइडिया नहीं है बॉस. But Klopp just said yesterday कि I was reiterated what I always said कि if you don't want to be here, I would not stop you from being here. Okay. So let's consider him a goner. Yeah, it's धवल ये टीम मोरल की बात है यार. एक अनहैप्पी प्लेयर को टीम में क्यों रखना है जिसको वहां पर रहना ही नहीं है. वो वाइब्स भी दूसरे लोगों पे जाती है. It affects team morale. Yes, Klopp का clear है कि if you don't want to be here, I am not stopping. Exactly. However good the player is, if he doesn't want to be there, there is no point in forcing him to stick. Yeah, like we don't know for sure like कि circumstances क्या है Gini के case में, like he wants to play for Koeman or is it the money? We don't know. No, actually what I understood was मतलब उसका contract ऐसा था कि I think they offered a 29 3-year contract until 32 with increased in wages, but Gini wanted probably 5-year contract. Okay. So मतलब 34 तक तो I think and game time assurance. Yeah, that is issue. अच्छा. तो I think वो तो अब 3 year में game time Klopp, I think our team could still agree, but I don't think our club would agree to 5-year contract and assured game time because he's not getting any younger. ठीक है, he's still the most consistent midfielder in our team. Okay. बट क्लब का भी एक स्टैंड होगा ना, वो हर चीज तो प्लेयर मांगेगा वो दे देगी नहीं. I think probably Klopp is cool. Probably cool to let Gini go because we have a ready-made replacement in Curtis Jones. Yes, I think Curtis Jones or maybe if Gini leaves, we will get one midfielder. I am a big fan of Declan Rice. Yeah. Declan Rice is only 22 and a big part of West Ham in top 6 is Declan Rice. Exactly. Yes. He has been very good. And he is like young and plus English है तो वो homegrown कोटा में भी वो fit हो जाएगा फिर. Okay. But probably Klopp, if he doesn't want to sign, we already have Curtis Jones. So I think losing Gini would be a big shame because he's going out on free. But we do have replacements lined up. I'm sure Klopp already has. I firmly believe कि Minamino should replace Firmino. Like just play Minamino for whatever amount of time he can play. We now see it at Southampton. It's just that अपनी वहाँ पे like he was not getting
he was not gelling in the team for whatever reasons. But True. just give him the chance and like bench Firmino for next season. Like I don't see any other option. Yeah. So should we just move on to the move on to it. So we have enough. Can you see the screen? You can see the prediction. Yeah, I can see it. I can see it. Okay, so let's start with Burnley versus Arsenal, which is today's 6 p.m. game, which is live in just 5 hours apparently. So should we go for an Arsenal win here? Yes. I think Arsenal win. And any scoreline? 1-2. Are you happy with that? Yeah, I'm same. I think players to have or players to watch, we'll just skip for this. Just skip for it. We are just making some predictions. So Sheffield United versus Southampton, tough game to call. I think Southampton. Or Southampton win. I think let's go for Southampton win. Yeah, okay. Same. I will go for 1-2 again, or probably 1-0. I don't see Sheffield scoring, but 1-0 probably. It could be 2-0, but 1-0 for me. 0-1. 1-0. Southampton win with 1-0. Aston Villa versus Wolves. It's a tricky one. I go with Villa win because home advantage. वैसे home advantage ऐसा कुछ रहा नहीं है, but still Villa is pretty good. I think I will go for draw. 1-1. Yeah, so same draw for me too. Yeah, majority wins, I guess. 1-1. Yeah, I think both will score. No. Brighton, Leicester. I am going with Brighton win. Brighton win. I'll go for draw because Leicester का form अभी थोड़ा dicey लग रहा है मेरे को. Brighton is lately in good form, so I would go for Brighton win. Just 1-0 probably. Maybe you can go for draw if Dhaval. I don't know what Dhaval. Yeah, Dhaval because I have no preference here in this picture. I don't know. I don't see them like playing. So I guess Meet saying so. I'll go for Brighton win too. Just 1-0 I guess. इस पे आशुतोष भड़केगा, but ठीक है. अच्छा है ना, वो नहीं है. West Brom Newcastle relegation battle. Don't ask me, please. Yeah. West Brom win. Or probably draw. Yeah, most likely. Okay, West Brom win रखना. Okay. And probably just keep 2-1 or something like that. 1-0. भाई इधर तो लिवरपूल win, please. Yeah, we will win. Please. फुलम को तो उड़ा देंगे. ये अपने होम पे अवे है. अपना होम है. अरे यार. Nah, we'll win. We'll win. Salah मारेगा. I'm keeping Salah captain. Yeah. Same. I'll probably keep this a 2-0 win for us. Go. Salah captain मत रखना. City का double game. अरे हाँ. अच्छा. Okay, Gundogan रखूं. Gundogan or De Bruyne. Oh, okay. You don't have De Bruyne, so I think Gundogan is the one. Okay. All right. Probably keep De Bruyne. Alright, Gundogan as well. I'll go for 2-0 here. Oh, big match. City win. Draw. United win. Why? City will drop points. This is a fixture we are all going for different results. I agree with Meet. United win. They can. Next week मैं वापस आऊंगा इस पे. देखो ये फिक्सचर में like we can never write off Manchester United कि उन लोगों ने last few seasons में हराया है. हाँ, वो होम पे भी हराते हैं सिटी को. The thing is United है तो घटिया टीम, but वो कुछ टीम्स के सामने खेलना जानती है, खास करके अपने और सिटी के सामने वही they'll know how to turn up against these teams, and they have the biggest diver in the league. हाँ, वही तो to match Sterling they have Bruno. वो सिर्फ वो हैरी पॉटर के तरह हवा में भी स्पेल जाएगा तो वो गिर जाएगा, ठीक है ना. रैशफोर्ड भी कम नहीं है. like it's a team of divers. सिटी के सामने तुम कैसे जीतोगे? डाइव मार दो बस. So do you want Spurs and Crystal Palace? Is a Spurs win. Bale form में है. Yeah. 2-0. मैं probably I'll just keep that. Yeah, go with 2-0. Yeah. Chelsea Everton. I guess 1-0 Chelsea win क्योंकि I think Chelsea will win. Yeah, Thomas Tuchel के अंदर the defense is really improved. But on the other side, draw जाए तो अपने लिए फायदा है. Yeah, but वो होगा नहीं ना. नहीं.
See, chances तो है, but Thomas Tuchel के अंदर what I have noticed in Chelsea is they don't concede, but they don't score that many as well. थोड़ा defensive. Yeah. Probably like one. Even Everton has a good manager. Like Ancelotti is not a fool. Yeah. So like it's not the Everton of old. True. This is a tricky one. I think ये high scoring हो सकता है. पर मैं तो still West Ham win पे ही जाऊंगा. Okay. Because Bielsa थोड़ा Yeah, I think West Ham could win. He's not very reliable. मतलब वो consistent नहीं है Bielsa का football. Yeah, play attacking football तो मतलब defense obviously they are not. मैं सोच रहा हूँ 3-2 win लिखूं. तो ज्यादा हो जाएगा वो. 2-1 yeah, for 2-1 for me too. ठीक है. So okay, I'm not 11th fixture का भी एक prediction है. हाँ, वो इंडिया और इंग्लैंड का 4 तो जा चुकी है इंग्लैंड की. स्टोक्स आउट हुआ है, तो प्रेडिक्ट करो मैच खत्म कब होगा. इनिंग्स से जीतेंगे. I think इनिंग्स से जीत जाएंगे. Okay. Yeah. हम सब agreement में उसके साथ. Yes. So should we just wrap this up now? Yes. Yeah, I think we have covered everything. Yeah, I guess that's it from our side. If you have any queries, suggestions, you can tweet us on at LFC Ahmedabad, or you can always leave them in the comment section below. So that's it from our side today, guys. Hope to see you soon in the next video. Bye bye. See you. Bye. Bye.